हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण समस्त को शरत एजुकेशन स्वागत। आज आम आज वीडियो रे स्टैटिस्टिक्स रो किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करवा जहाँकि आम ये पीडीएफ टाक आपण मानको हम ग्रुप रे भी शेयर कर देबी। ता सहित आपण मान ताको प्रैक्टिस भी करि परिबे, जहाँकि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऊपर क्वेश्चन रहबो जोथि कि हमरा आमे कोन करन ताको स्किप कर दे पड़ जांती। ओके, ता मन टोटल 50 टा क्वेश्चन रहबो, 20 मिनिट रे ताको सारिबा। क्वेश्चन पढ़िबा, आंसर करिबा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज। सैम्पलिंग आम केमती डिफाइन करवा, गोटे सेकंड में हाईलाइट करनी। ओके, सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज कौन कहूँ, सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनालिसिस इन ऑफ आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज। पॉपुलेशन आम क्या डिफाइन करवा, द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट दैट which we want to draw conclusion, जो हम conclusion करिया चाहते हैं। ये sample कौन कहया, what is sample is defined as। sample meaning है subset of population selected by analysis। इस बी होगा आंसर, इटा होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, ता पैरामीटर रेपोस्ट, पैरामीटर्स मीनिंग कौन, ये वाला क्वेश्चन हमर आसी पारे। ओके, पैरामीटर माने ये न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, जोटा कि हम पैरामीटर बोली कहते। न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स रेपोस्ट, स्टैटिस्टिक्स मीनिंग कौन, स्टैटिस्टिक्स मीनिंग कहूँ ये न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। इटा भी से ही हम जेटा इटा हो स्टैटिस्टिक्स माने हमर डाटा को लेके क्वेश्चन बर्तमान ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। हम तो कोडा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नो। सैंपलिंग सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, कन्वीनियंस, कोटा हबो इटा हमर आंसर हबो कन्वीनियंस सैंपलिंग हबो, नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग not a type of non-probability sampling। non-probability sampling हम कोटा कोटा, judgment, snowball, systematic। डी हला systematic हला, not a non-probability sampling। ओके, in sampling is कौन is simple random sampling। simple random sampling हम क्या कहबा, every member of population has equal chance of being selected। एटा ही जो हमर आंसर। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इनवॉल्व्स, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हमर कोडा कहबा, हमर आंसर हबो selecting every 9th number of population, selecting a specific number of individual from each group, dividing the population into groups based on certain characteristics। नहीं, बी और सी हबो, त माने बोथ बी एंड सी हबो। स्ट्रैटिफाइड हम स्टार्टर तैयार करछन, तेन कर सिलेक्टिंग एवरी 9th नंबर और सिलेक्टिंग ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच ग्रुप। नेक्स्ट कहला क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग कौन कहूँ, इटा हम कौन, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सिलेक्टिंग nth नंबर, नहीं, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर एंड रैंडमली। हाँ, सी ऑफ आंसर। नेक्स्ट देखो, सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर ऊपर हमर क्वेश्चन रहला। सैंपलिंग एरर इज डिफाइंड एज। सैंपलिंग एरर हम का कहबा, सैंपलिंग एरर कहबा ए डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। हाँ, एटा को आंसर। स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर डिफरेंस टाको हमें सैंपलिंग एरर बोली कहबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंपल, सैंपलिंग एरर। आ भितर कोडा सैंपलिंग एरर नो, रैंडम सैंपलिंग, नॉन रेस्पॉन्स, मेजरमेंट, कवरेज। हमर हबो मेजरमेंट एरर टा, जोटा कि हम नॉट ए सैंपलिंग एरर जीवनी। एरर टाइप्स टाको मन रखो, रैंडम, नॉन रेस्पॉन्स, कवरेज। नॉन रेस्पॉन्स एरर, नॉन रेस्पॉन्स एरर मीनिंग कोन, और केते बेले हबो एटा, some selected individual do not participate in survey, सेटा हबो नॉन रेस्पॉन्स एरर हबो। कवरेज एरर कोन हबो, कवरेज एरर occurs when केते बेले हबो, some members of population are excluded from the sampling frame। हम ताऊ नहीं चंदी किंतु तांको एक्सक्लूड कर दी चंदी। हो द फॉलोइंग टेक्निक रिड्यूस नॉन रेस्पॉन्स एरर, कोटा भितर रिड्यूस करबा, यूजिंग इंसेंटिव्स जदि हम यूज करबा ताहने हमें रिड्यूस कर परिबा। और डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऊपर आइला क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू summarize the distribution of a single variables। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हिस्टोग्राम रो मीनिंग कौन पचारला, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हिस्टोग्राम कहते हैं। ये बार चार्ट इज यूज्ड टू
बहुत सिंपल जिनस जोटा कि आम परीक्षा आसी भी पारे कंपेयर कैटेगोरिकल डाटा हम आमर आंसर बार चार्ट हम कौन करते कंपेयर करते कैटेगोरिकल डाटा पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल पार्ट को हमें कंपेयर करते पाई चार्ट रे स्कैटर प्लॉट इज यूज्ड टू हम कौन करते शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स तापर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस ऊपर हमर रहला क्वेश्चन सो ये कॉन्फिडेंशियल इंटरवल इज कौन हम आंसर आंसर अब a range of values that is likely to contain the population parameter हम कहला range of values that is likely to contain the population of parameter এটা হবো confidence interval তারপর hypothesis testing involves ये hypothesis testing কোড रे involves होची এটা হবে আমরা মেকিং এ ক্লেম अबाउट ए population parameter and testing it हम ता कोन करिया टेस्ट करबा ता रिजल्ट बाहर करबा null hypothesis is null hypothesis हमें का कहबा कहबा स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस और नो इफेक्ट नल हाइपोथेसिस जोटी नो डिफरेंस अछि नो इफेक्ट किछि नाही एठी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट वी वांट टू प्रूव जोटा कि हमें प्रूव करिया चाहउछथि पी वैल्यू कोन व्हाट इज पी वैल्यू ला द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एज एक्सट्रीम एज और मोर एक्सट्रीम देन the one observed assuming the null hypothesis is true. Okay, p value la probability of observing a test statistic as extreme as or more extreme as than one observed assuming the null hypothesis is true. Eta मन रखियो क्वेश्चन रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर आला डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऊपर आला क्वेश्चन आउटलायर मीनिंग कोन आउटलायर का कहबा आउटलायर डाटा पॉइंट्स दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर डाटा पॉइंट्स माने आउटलायर माने ला एक्चुअली एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जोटी कोन कहला डाटा पॉइंट्स दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉइंट्स जोटी सरी गला बोली से कहूछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ हैंडलिंग आउटलायर आउटर कोडा कॉमन मेथड नो रिमूविंग कैपिंग विंचरिंग एवरेजिंग कोडा हम आंसर हमर आंसर हबो एवरेजिंग आउटलायर हबो जोटा कि हमरो कॉमन मेथड आसुनी ए तीनटा को मेथड्स रा आसुची एटा मन रखिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि हैंडलिंग आउटलायर्स रिमूविंग आउटलायर कैपिंग आउटलायर विंचरिंग होची आउटलायर तापर कोरिलेशन मेजर्स कोन मेजर्स करती कोरिलेशन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स तापर रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू रिग्रेशन एनालिसिस हम कोन पे यूज करथि predict the value of one variable based on the value of another variable okay गोटे वेरिएबल अन्य वेरिएबल ऊपर कोन तार अछि इंपोर्टेंस अछि सेटा हमें टेस्ट करथि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आबितर कोटा में सेंट्रल टेंडेंसी रा मेजर सेंट्रल टेंडेंसी रा हमर रेंज हबो नेक्स्ट डाटा एथिक्स डाटा रे कोन एथिक्स अछि डाटा प्राइवेसी रेफर्स टू डाटा प्राइवेसी हमर कोन आसीबो प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस protecting personal information from unauthorized access तापर डाटा बेसिस occurs when डाटा bias occurs when केतबले डाटा रे bias आसीबो कोन कहला डाटा इज कलेक्टेड एनालाइज्ड और यूज्ड इन द वे दैट सिस्टमैटिकली फेवर्स और डिसएडवांटेज सर्टेन ग्रुप्स एटा हो आंसर कोन हबो डाटा कलेक्टेड एनालाइज्ड और यूज्ड टू इन वे सिस्टमैटिकली फेवर्स जोटी फेवर्स रोच से जगह हमर कोन हिजो हमर आंसर हिजो डाटा सिक्योरिटी रेफर्स टू डाटा सिक्योरिटी हम का कहबा प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस यूज डिस्क्लोजर डिसरप्शन मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन इता को हम कहबा डाटा सिक्योरिटी तापर आला डाटा विजुअलाइजेशन ये लाइन चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर कैटेगोरिकल डाटा शो ट्रेंड ओवर टाइम तापर कोडा आंसर हमर आंसर हबो कंपेयर कैटेगोरिकल डाटा को हम कहबा लाइन चार्ट कहबा ओके कैटेगोरिकल डाटा को हम जेतो कोन करंती कंपेयर करंती सेटा हम लाइन चार्ट बोली कहंती नहीं सॉरी एटा आंसर होबनी हम कंपेयर करंती हम ट्रेंड शो करंती टाइम लाइन चार्ट लास्ट वीडियो रे हम डिस्कशन करथिले ना लाइन चार्ट होची जोटा कि हम ट्रेंड शो करंती टाइम टू टाइम ओवर टाइम टू टाइम एटा कंटिन्यू सॉरी क्वेश्चन बी होबो ये हिट मैप इज यूज्ड टू इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मन रख एटा टर्म रा मेन हमको जानिबा दरकार जोटा कि हम क्वेश्चन आसी परियो कोन कहला ये शो
the relationship between two numerical variables. Heat map को काउ कहबा relationship between two variables रे numerical variables रे से relationship होगो. ये box plot एटा भी important अछि. Used to a box plot हम काउ कहबा show the distribution of a numerical variable. Show the distribution of a numerical variable को कहबा. तापर data mining आउ machine learning. यूरा हमारा एलो नुवा यूरा होची स्टैटिस्टिक्स रे होची नुवा नुवा कांसेप्ट. डाटा माइनिंग काउ कहबा. डाटा माइनिंग हला द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन द लार्ज डाटा सेट. माने पैटर्न ता हम कोन अवेलेबल अछि माने हम एनालिसिस करिया पे डाटा माइनिंग करता. सुपरवाइज्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स कोड रहछि. हमर इटा रहइबो ट्रेनिंग ए मॉडल ऑन लेबल डाटा. ट्रेनिंग ए मॉडल ऑन लेबल डाटा कौन कहबो सुपरवाइज्ड लर्निंग कहछि ए ट्रेनिंग ए मॉडल ऑन लेबल डाटा. तापर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स कोड हबो. तापर ट्रेनिंग ए मॉडल ऑन लेबल डाटा हबो. तापर लेबल डाटा हला ऑन लेबल डाटा हला. तापर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. हम कोडा कॉमन नो. लिनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, क्लस्टरिंग ना ऑल ऑफ द अबव. 40 नंबर डी हबो ऑल ऑफ द अबव आर कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. एरा सब जान कॉमन रहबो. ता माने आ भीतर कोडा भी नो. तार बिग डाटा ऊपर क्वेश्चन है. बिग डाटा रेफर्स टू बिग डाटा का को रेफर्स करछि large volume of data that cannot be processed using traditional data set management tool. जोटा हम बिग डाटा बोली कहबा. 3V of big data are कौन आंसर. आंसर होची वैल्यू, वेराइटी एंड वॉल्यूम. वैल्यू, वेराइटी एटा हो ना नहीं सॉरी एटा हो ना. 3V होची वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी. वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी हबो आंसर. टिके मु उल्टा पुल्टा कह देली. ओके एटा हबो 42 नंबर ए हबो आंसर. तापर ला हुड ऑफ हार्ड ऑफ कौन एटा स्पेलिंग करी. ओके आपण माने स्पेलिंग करंतु. हार्ड ऑफ इज ए प्रोग्राम लैंग्वेज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कौन हबो आंसर. हमर आंसर हबो सी ए सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज डाटा सेट. हुड ऑफ तो हम कोन कहबा सॉफ्टवेयर गोटे सॉफ्टवेयर एटा एक्चुअली. डाटा वेयरहाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस. डाटा तापर हला डाटा वेयरहाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस. डाटा वेयरहाउसिंग इज ए कोन ये कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा फॉर एनालिसिस. तापर ओएलटीपी रो फुल फॉर्म कोन कहला. OLTP रो फुल फॉर्म मान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. OLAP रो स्टैंड फॉर कोन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. एटा होची ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. बी हो कोन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ऊपर ला OLTP रो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस हला. ला ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हला. तार बिजनेस इंटेलिजेंस कोन होची द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डाटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. तापरे ये डैशबोर्ड का कहबा. ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. तापरे नेक्स्ट हैला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन डाटा विजुअलाइजेशन टूल. आ भीतर कोडा कॉमन नो. एसपीएसएस टा कॉमन नो. ओके नॉट ए कॉमन डाटा विजुअलाइजेशन टूल. जोटा एसपीएसएस टा कॉमन एटा होचे एनालिसिस टूल. जोटा कि इफेक्टिव डाटा विजुअलाइजेशन शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव. ओके हमर शॉर्ट रे सारी चाहूले 50टा क्वेश्चन छाड़ देले. आको ये क्वेश्चन को आपण माने आउथरे निजे प्रैक्टिस करंतु. थैंक यू.